Hello guys, so as you know, the final judgment of the NEET fiasco in the Supreme Court has come out, and the written form has been analyzed by me, and I am going to break down the matter whether NEET can be conducted or not. So in the table we can see there are parts A to H, and in the first it is just the overall overview which all of us know, so I'm not going to go into that. Now if you go next, the first part which interests me is that it has been mentioned that the CBI has filed status reports on 10th July, 17th July and 21st July 2024. The entry of the CBI is a very important part, and why? I'll get to that later. Part B, clause number 22, page number 15, it has been written that the court also accepted the report of IIT Delhi on the correct answer to the particular question. But what was more important is that the court also clarified that candidates could agitate any individual grievances not bearing upon the issues resolved in the judgment. Now that line is very important because it clarifies that due to the presence of this phrase not bearing upon the issues resolved in that judgment, no review petition is probably going to work in this case because they are going to be trashed, because these issues have been already resolved in the judgment. And in any case, even if the candidates want a review petition, they have to first go to the High Court, and then the High Court might send them to the Supreme Court, which is even a bit of a stretch. Probably not going to happen. So this is the news which should calm everybody down. Now to go to the detailed part, the petitioners were represented by Mr. Narendra Huda and Mr. Sanjay R. Hegde. Part C, clause G, page number 17 states, NTA has not adopted a fair marking scheme for one of its questions. Although only one option is the correct answer, it has treated two options as being correct and has awarded marks for both answers. This is unfair and disadvantageous to many candidates. Part C, clause number 23, subclause R, states that the scandal has undermined public trust in examination center. It has led to quote unquote mental health issues among students, which is a real thing. Clause number 24 of the same page says that the Solicitor General of Union of India and Mr. Naresh Kaushik, the senior counsel of NTA, advanced the following submissions. They said that no mass leak took place, only isolated incidents of malpractice took place, which have been identified and dealt with. They said that in Godhra, no real cheating has happened. The attempt to cheat was foiled by prompt action of the authorities. The preliminary number of candidates alleged to have cheated is minuscule. Subclause C, part C, page 19 states that the top 100 candidates were from 95 different centers in 56 different cities in 18 states or union territories. And they have said and established that there was no leak of question paper via telegram. Also, they have made it clear that the reopening of registration window did not lead to the facilitation of malpractice. So, part E of the judgment, page number 23, clause 36 states that the NTA has reported that the leak of examination paper occurred between 8:02 am and 9:23 am on 5th May 2024. The CCTV footage has shown that the person who caused the leak entered at 8:02 am and left at 9:23 am. The accused opened the truck from the rear so as not to break the seal. This is the answer to why Harsh Dubey was saying कि उन्होंने तो ट्रंक भी फाड़ दिया था, तो ट्रंक में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उन्होंने ट्रंक पीछे से ओपन किया था, जो हर्ष के दिमाग में नहीं गया. And it has been written, clause number 37, following the transfer of the investigation to it, the CBI has filed its status report on 10th July, 17th July, 21st July. उन्होंने ये कहा है कि बॉटनी और जूलॉजी का सेगमेंट पहले सॉल्व किया गया था, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेगमेंट, फिर स्कैंड पेपर्स को व्हाट्सएप के द्वारा पटना में मौजूद लोगों को भेज दिया गया था. पटना के 2 लोकेशन और हजारीबाग के 2 लोकेशन में ये घपला हुआ था. ये इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट्स को 10-15 के बाद ही मिला था और 12 PM को उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर तक चले गए थे. The important point, clause number 38, which is not actually relevant, but it shows that there has been a mismanagement in the NEET exam, shows that 12 centers had actually received the question papers from the Canada Bank instead of SBI.
4 centers replaced the papers originated in Canada Bank with papers lodged in safe custody with SBI. बट 8 सेंटर में कनाडा बैंक का क्वेश्चन पेपर में ही पूरा एग्जाम हुआ था. ऐसे 3,307 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पूरा एग्जाम कनाडा बैंक के पेपर में ही दिया था. CBI का रिपोर्ट says that 155 students from the examination centers in Hazaribagh and Patna appear to be the beneficiaries of the fraud, जिनमें से 30 पटना में है और 125 हजारीबाग में है. No material has been placed before us to demonstrate that the question paper or the solved answers were circulated at random or en masse over social media. और गोधरा का प्लान तो होने से पहले ही नष्ट हो गया था, इसलिए उसका भी कोई बेसिस नहीं है. The Supreme Court judgment has also said that there is no conflict of interest with the director of IIT Madras analyzing the data in this case. This line can be found in Part E, clause number 53, subclause number 3, page number 30, including the fact that he is merely an ex officio member of the governing body or general body, leads us to the conclusion that the report of director of IIT Madras cannot be faulted on the grounds of bias. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, in the interests of justice and fairness, the court has independently considered the data placed on record before reaching a decision on whether the petitions in this case ought to be allowed. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी जांच की है, इसके बाद ये तय हुआ है. और इन्होंने पार्ट ई पेज नंबर 33 क्लॉज नंबर 60 सब क्लॉज नंबर 4 सब क्लॉज नंबर ए में क्लियरली कहा है, देयर इज नो एविडेंस टू इंडिकेट अ सिस्टमिक लीक एज ऑन डेट. फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, इट इज सेटल्ड लॉ दैट द कैंसिलेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन सिर्फ वहीं पे होता है जहाँ पे सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम सिस्टमिक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है. फिर उन्होंने 8-10 ऐसे पुराने केस के एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनके बारे में भी बात करने जा रहा हूँ. क्लॉज नंबर 62 पेज नंबर 33 पार्ट ई, अनामिका मिश्रा वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट ने एग्जाम कैंसिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि एग्जाम कैंसिल करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एरर्स यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन में एरर्स सिर्फ इंटरव्यू में हुआ था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो पहले वाले रिटन एग्जाम है वो रद्द नहीं होगा, सिर्फ जो इंटरव्यू है इंटरव्यू फिर से होगा. इसका रीजन कोर्ट ने यह दिया था, quote unquote, it was not a suitable course of action to cancel an examination when no systemic leak issues persisted. Clause number 63, Part E, page number 34. Bihar High School Examination Board versus Subhash Chandra Sinha. It can be seen that the number of proportion of students who can be believed to have indulged in malpractice is a relevant factor in deciding cases such as the present one. Part E, Clause 64, page 35. माध्यमिक शिक्षा मंडल MP वर्सेस अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति. इसने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नायब तहसीलदार ने एक रिपोर्ट भेजा था जहाँ पे उन्होंने देखा था कि घमासान चीटिंग हो रहा था. And the court mentioned that it was exceedingly difficult to identify the students who were committing malpractice and those who were not. Hence, the board was left with no alternative but to cancel the exam. Part E, page 35, clause number 65, Sachin Kumar versus Delhi Subordinate Service Selection Board. इन्होंने ये देखा है सुप्रीम कोर्ट इस केस में कि एग्जाम को कैंसिल नहीं करना चाहिए unless it stands vitiated on grounds of unreasonableness or proportionality. Clause number 69, Union of India versus Rajesh PU. यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि in this case it was possible to separate the beneficiaries of malpractice from the candidates who conducted themselves in an upright manner. Hence, quote unquote, there was no justification to cancel the entire selection and emphasize the importance of the information available to the court as well as that of concrete and relevant material. जिससे ये प्रूव हो जाता है in a roundabout way that the petitioners in the NEET 2024 case did not have any actual proof, they were mostly just bluffing. Clause number 70, that the question paper was leaked and some students indulged in malpractice is beyond cavil. No party before the court including NTA disputes this. मतलब ये तो established fact है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि लीक सिस्टमिक था या नहीं, और ये क्या ये एंटायर एग्जाम का सैंक्टिटी नष्ट करता है या नहीं करता है. पॉइंट नंबर 71,
सुप्रीम कोर्ट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट द काउंसलिंग प्रोसेस में रैंक मैटर करता है बिकॉज इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम. द मार्क्स डू नॉट मैटर. हाउ मेनी पीपल स्कोर्ड above 500, above 600, above 700 is not important. The rank is important. And through this rank it has been proved कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा एनालिसिस की है उससे ये निकल के आता है कि हजारीबाग, गोधरा और बिहार का उन्होंने ये कितने 56,000 के ऊपर कितने लोग हैं और 1,08,000 के ऊपर कितने लोग हैं इसकी जांच की है और इसका रिजल्ट निकला है. In Hazaribagh, 2733 candidates appeared. 126 candidates are within rank 1,08,000. Success rate 4.6%. 58 candidates are within rank 56,000. 2.1%. Success rate actually गिरता जा रहा है. 1,08,000 के नीचे इस साल 4.6%, इसके पिछले साल 6% और 2022 में 7.2%. मतलब भाई हजारीबाग का रिजल्ट तो खराब हुआ है. एंड इन पटना वी कैन सी दैट 48,643 कैंडिडेट्स अपीयर्ड. 2691 कैंडिडेट्स आर विद इन रैंक 1,08,000 which is 5.5%. 1482 candidates are within rank 56,000 which is 3%. In 2022 the success rate was 8.9% and 2023 the success rate was 7.7%. This year it is 5.5%. So this year also the success rate in Patna has been lower than the last 2 years. In Godhra, 2484 candidates in total appeared. There were 21 candidates within rank 1,08,000 which is 0.8%. 13 candidates within rank 56,000 which is 0.05%. To compare the success rate, पिछले साल 2.1% था, उसके पिछले वाले साल 1.5% था और इस साल ओनली 0.8%. मतलब गोधरा में भी घपला नहीं हुआ है. It becomes clear that there has been no abnormalities in the results in 2024 when compared with the results for the past 2 years. The report of the director of IIT Madras also supports the conclusion of this court. The report stated that there were no abnormal indications in the result for this year when compared to previous years. It also stated that analysis shows that there is neither any indication of mass malpractice nor a localized set of candidates being benefited leading to abnormal scores. Hence, an analysis of the results does not lend support to the case of the petitioners. मतलब ये जो लोग कर रहे थे ना, चलो डेटा एनालिसिस से सब साफ हो गया, भाई साफ तो हो गया लेकिन ये तुम्हारे फेवर में तो नहीं हुआ, ये नीट के फेवर में ही हुआ है. और अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि नीट के रजिस्ट्रेशन में रीओपनिंग का. एनटीए ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2 दिनों के लिए खोला था 9th and 10th अप्रैल 2024 में. वहाँ पे एनटीए ने ये क्लियर किया था कि बहुत से लोगों को ओटीपी, आधार ऑथेंटिकेशन, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट में दिक्कत हो रही थी. एंड अदर टेक्निकल इश्यूज वर आल्सो रेज्ड. Also, the high courts of Rajasthan and Karnataka had actually asked NTA to permit certain petitioners to register for the NEET exam after the last date. NTA states that कि उन्होंने सबके बारे में सोच के जनहित में जारी उन्होंने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को दोबारा से ओपन किया ताकि सभी लोग फिर से अपने फॉर्म सबमिट कर सके. द डेटा शोज दैट 8039 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ऑन 9th अप्रैल 2024. उनमें से सिर्फ 5 कैंडिडेट टॉप 1,08,000 रैंक में थे और सिर्फ 2 कैंडिडेट्स टॉप 56,000 में थे. मतलब सक्सेस रेट था 0.06% and 0.02% respectively. Further, of the 14,007 candidates who registered on 10th April 2024, 44 were in the top 1,08,000 ranks and 23 were in the top 56,000 ranks. मतलब सक्सेस रेट इसमें 0.31% and 0.14% था. मतलब ये रिजल्ट भी खराब ही हुआ है. और जो सेंटर चेंज करने का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग सेंटर चेंज करते हैं ताकि अपनी सुविधाएं हो. इससे आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि उन्होंने चीटिंग किया है. द डेटा इज नॉट एबनॉर्मल एंड देयरफॉर डज नॉट इंडिकेट दैट अ सिस्टमिक ब्रीच हैज टेकन प्लेस. Therefore, the fact that some aspirants changed their preferred cities taken alone cannot be considered evidence of malpractice or of dishonest intention. टेलीग्राम के इशू पे आते हैं. क्लॉज नंबर 82 पार्ट ई पेज 44 यहाँ पे कहता है कि जो हुआ था
कि वो पिटिशनर्स कह रहे थे कि ये टेलीग्राम का वीडियो रियल है, 4th में को पेपर लीक हुआ है, और एंटी एफिडेविट में कह रहा है कि वीडियो टेलीग्राम में आया था वो एक्चुअल में नकली था, टाइम स्टैम्प बदल गया था, और ये दिखाने के लिए कि लीक एग्जाम के पहले हुआ था. द इन्वेस्टिगेशन बाय CBI रिवील्ड दैट द इमेजेस इन द वीडियो वर इंडीड डॉक्टर्ड, quote unquote. The Telegram channel itself was created on 6th May 2024 and the paper was uploaded on 7th May 2024. Hence, there is no merit in this allegation. Part E, Clause 84, page 45. Sufficient material is not on record at present which indicates a systemic leak or systemic malpractice of other firms. The material on record does not at present substantiate the allegations that there has been a widespread malpractice which compromised the integrity of the exam. To the contrary, an assessment of the data indicates that there are no deviations which indicate that systemic cheating has taken place. The information before us at this stage does not show that the question paper was disseminated widely using social media or the internet, or the answers were being communicated to students using sophisticated electronic means which may prove difficult to trace. मतलब ये बेनिफिशियरीज को सेपरेट करना आसान है और ये होगा भी. फिर पिटिशनर्स जो कह रहे थे कि तन्वी सरवाल वर्सेस CBSE का केस उठा रहे थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस इन 2015 एंड 2024 निकाले हैं. उनमें से ये है कि स्कैम बहुत सी जगह स्टेट्स में हुए थे, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, हरियाणा. 358 मोबाइल नंबर्स यूज़ किए गए थे. वो स्कैम बहुत बड़े मात्रा में हुआ था. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, the Inspector General of Police Haryana admitted that it may not be possible to identify every single beneficiary of the leak. इसलिए रीनीट हुआ था उस साल, सॉरी रीनीट नहीं, AIPMT वगैरह वगैरह, बट इस साल रीनीट होने के 0% चांस है. द कोर्ट वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट 2015 में द modus operandi of the leak made it likely that the numerous candidates apart from the 44 who had been identified at the time were likely to have been the beneficiaries. डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट खुद स्पेसिफाई करते हैं पार्ट ई क्लॉज नंबर 89 पेज नंबर 48 में कि 2015 में सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था जो इस साल नहीं हुआ है. क्वेश्चन पेपर 2015 में व्हाट्सएप में एग्ज़ाम के पहले दिन से ही शेयर हो गया था, लेकिन इस साल ये नहीं हुआ है. इस साल एग्ज़ाम शुरू होने के बस कुछ ही घंटों पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट सर्कुलेट हुए हैं, वो भी लिमिटेड संख्या के लोगों में. No such nationwide ring is present in the case in 2024. Fourth, in 2015, the court found it is not possible to separate the beneficiaries of the leak, but in 2024, the court can see that it is easily possible to separate the beneficiaries of the leak from the untainted candidates. The decision in Tanvi Sarwal Supra does not support the case of the petitioners. The allegations in this case are not substantiated by the material on record. That means Tanvi Sarwal का केस एक्चुअली में इससे थोड़ा अलग था और ये नो रीनीट को ही फेवर करता है. बेसिकली कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि रीनीट होने के एग्जैक्टली 0% चांसेस हैं. 0% रीनीट अब नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रूफ के साथ देख दिया है. जितना प्रूफ ओरिजिनल जो 23 तारीख के जो एक्चुअल वर्बल जजमेंट था उसमें उतना क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इसमें दूध का दूध और पानी का पानी पूरा हो गया है. देयर इज़ नो डाउट लेफ्ट इन माइंड दैट रीनीट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन, एंड येस इट माइट हैपन इन 2025 बट डेफिनेटली नॉट इन 2024. पार्ट जी क्लॉज 101 पेज नंबर 55 states that the intense competition among the aspirants coupled with commercialization of education has led to a few towns and cities becoming hubs for classes which train candidates for competitive exams. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोटा और सीकर का इशू भी यहाँ पे जिक्र किया है. तो रीनीट तो अब नहीं हो रहा है. आई स्ट्रांगली एडवाइस यू एज अ नीट 2024 सर्वाइवर माई सेल्फ टू प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज. फालतू के बातों में ध्यान ना दे. हर्ष दुबे की चूतियापा में मत आए. Bye bye. Have a good day and all the best for counseling. Goodbye.